supposed to be passed out this. You see, my friend, since 2016, the NESO is fighting against this bill. We are not opposing any of the communities of the India, though they may be Hindu, Muslim, Sikh, Christian, everyone, but we do not oppose them. But the way this Citizenship Amendment Bill is going to be passed, it's very much, against the indigenous people of the northeastern state, and this is we don't since from the first day onwards we are against this bill, and will continue against this bill till this controversial bill is scrapped down in the parliament. In recent month, we have saw our protest there at Delhi also, in Jantar Mantar, where various component organizations of NESO took part. And this is, I think this is the 5th or 6th times we are going to show our sentiment against the central government about this Citizenship Amendment Bill. Numbers of numbers of Dharna, numbers of rally, and numbers of official delegation we have made. We have already done all the things, and this central government is not going to hurt our sentiment, and the central government is totally undermining the sentiments of the indigenous peoples of the northeastern state. So now this is first time the NESO is going to hit the road, hit the street. I mean that. So every one of you should cooperate us on that, giving that. The recently week NESO condemned the recently Honorable Prime Minister's press statement or meeting. Somewhere he made that the Citizenship Amendment Bill will be passed very soon, and the peoples who migrated from Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh, they will be given an Indian citizenship. So when the indigenous peoples of this northeastern state, they are crying for the justice, and again the central government, they are playing religious politics. So already the northeastern state is carrying numbers of burden, particularly this refugee from our neighboring neighboring country, Bangladesh and Pakistan, and again this move to grant a citizenship to all these Bangladeshis, though they may be a Hindu or any communities, to giving them a citizenship is a big burden again. I am telling you, my friend, if this bill is supposed to, if passed, the northeast will be unrest. The day is not far that the entire northeast will see the unrest, civil disobedience movement against the central government. We are not opposing any particular political parties, maybe a BJP, Congress, any political parties, but we are opposing if the political parties who adopt and who try to make any of the bill or rule which is detrimental, or which is which is very much detrimental for the peoples of the northeastern state. So this Citizenship Amendment Bill is very much detrimental for us, not only for Assam, it's for all northeastern state. Assam is already is a dumping ground now, and Assam is facing the ethnic groups, the indigenous peoples of the Assam. They are going to be a minority, and again, when Assam is suffering, that means entire northeastern state is suffering. That is due to that, the NESO take up the case. And this is the long war now. Since 2016, we are waging a war against this Citizenship Amendment Bill. And again, in the recent 4-5 months ago, the APSU, along with all the component organizations, met the JPC, Joint Parliamentary Committee, headed by the Chairman Agarwal. We had a meeting there at Meghalaya, Shillong. There also we have
show our that one discontentment, and even we pursue the JPC to cover up all the parts of northeastern state, including Arunachal Pradesh also. We invited the JPC, please do come here and see the ground realities, and see and to assist the the sentiments of the indigenous people of all parts of the northeastern state, so that the JPC can know the ground realities of the indigenous peoples. And on that meeting, the JPC team, they assure us that yes, definitely they will tour all parts of the northeastern state and will assist the ground realities. Now again, without without following their own votes, without following without completing all that ground formalities of the JPC, they are adopted that one Citizenship Amendment Bill, and is going to be placed on the 7th, that is tomorrow, on Parliament. So we are totally against that, and we'll against till this CAB that one is scrapped. So I invite the President and General Secretary of APSU, being the component organization of NESO, to brief the media and extend its solidarity support to the movement of the NESO. Thank you. Good afternoon, media friends. You have heard to the coordinator of NESO, Pritam Bhai Sonam, and he has in a very brief have explained the history and the movement why the NESO and its component organization like APSU is opposing the Citizenship Amendment Bill 2016. You see, yesterday we have received a communication from the central leadership of Northeast Student Organization, which was signed by the chairman and the Secretary General for enforcing 11 hours Bandh call in the entire northeastern states on 8th of this month. So being the component organization of NESO, and also because the Citizenship Amendment Bill is also detrimental to the interest of the indigenous people of Arunachal Pradesh, APSU has just now taken a decision in its central office, Neighbor Club building, that APSU will enforce the Bandh call in the entire state of Arunachal Pradesh on 8. So we'll be directing all our federal units, the college unions, the Rajiv Gandhi University Students Union, Branch Students Union, to enforce the Bandh call in the respective jurisdiction. The modus operandi, as all of you know, there are certain exemptions like the magistrate on duty, essential commodities like the milk van, the ambulance, the media, all of you who will be covering Bandh call. So, in context of Arunachal Pradesh, when we speak about the Citizenship Amendment Bill, we see a linkage, and we have been reiterating in the numerous meetings we have taken part in the NESO agitation from Meghalaya to recently in the last month at New Delhi, in the national capital. There also NESO, under the leadership of national leadership, we have protested in the Jantar Mantra regarding for the repeal of this Citizenship Amendment Bill. As I have said, in context of Arunachal Pradesh, you see this bill, the Citizenship Amendment Bill 2016, it's clearly stated that the minorities from the neighboring countries like Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, which includes the Hindus, the Buddhists, the Christians, Jains, Parsis. And when we speak about Arunachal Pradesh, we have been agitating against the presence of Chakmas and Hajongs in Arunachal Pradesh. And when you see from our angle, from the perspective of APSU and all indigenous people of the state, you see the Chakmas are Buddhist and Hajongs are Hindu. And we see clearly a very tactful move by the central leadership to grant citizenship, to grant them permanent residency also to them here in Arunachal Pradesh. So in particular, APSU has also its own grievances against this one. And since we are also in component organizations of NESO, this is a moment, this is a very historic, this one, 8 will be a very historic day. The whole of Northeast is standing united under the banner of Northeast student organizations. The central leadership, whoever it may be, the BJP at the present time, the Congress at a different time, cannot impose their will and cannot stifle our right. They cannot bulldoze things
which is detrimental, which is against the interests of the indigenous people of the northeastern region. Though we may be in a very less populated this one, but this is a secular country, this is a democratic setup. They should listen to the rightful citizens of the country. And you see, when we speak about the citizenship bill, the citizenship bill of India, which is in its original form, is a secular one. It does not belong to, it does not carry this one communal tag. But you see, when we see the new this one, the bill to be brought, it is in this one, it's against it contradicts the original this one. It's purely on religious line. So APSU in its strongest word, in support, in solidarity of NESO, strongly condemn the move and the announcement by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, in his recent this one, in his recent public this one announcement in Assam, in the Barak Valley, that the citizenship amendment bill will be passed in this one, in the ongoing this parliament session. So I, on behalf of APSU, appeal all the denizens of the state, cutting across party line, all the social this one, societies and all the CBOs, all the other student organizations that does not come under the purview of APSU, to give its solidarity, give its support in its fights for the rights of indigenous people of the state. Thank you very much. So we are opposing, and we are also opposing. India is for Indians. नेशनल लीडरशिप का हमेशा एक स्लोगन रहा है, इंडिया इज फॉर इंडियंस. और यहाँ में देखो हम लोग सिटीजन है, हम लोग इंडिया का फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. हम लोग को छोड़ के, हम लोग के अलावा किसी को ज़्यादा प्रिविलेज देने का, और जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन राइज किया है, जिस प्रकार से जो बुलडोजिंग जो टेक्टिक्स हैं, दिस इज अनवारंटेड एंड अनवांटेड. ये ज्वाइंट आपका जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी वो ऑलरेडी बिल को टेबल करेगा 7 तारीख को, कल ऑलरेडी कल करेगा. और लोकसभा में आप देखा जाए तो बीजेपी का एमपी ज़्यादा है, तो अगर वो लोग जैसे ट्रिपल तलाक को लोग पास कर दे, आप लोग अगर अमेंडमेंट बिल को भी पास कर देता है तो आप लोग क्या व्यवस्था करेगा? No, you see, that I am telling you, my friend, we are not authorized to enter into the parliament, that is clear. And we have a numbers of MPs from our northeast, almost 24-25 MPs from northeast are there, and they are mute spectators now. Most of them they are belong from BJP. Even our that one Kiran Saab also, they are from BJP, and others are come under the NEDA. So if they passed, I have already told you that Northeast will be unrest. You will see. नेसो ऐसे चुपचाप नहीं बैठने वाला है. Northeast जो unrest में देखेगा, civil disobedience will be there unless you scrape down again. So ये में तो लोकसभा में तो शायद वहाँ तो ओपोजिशन कम है, पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में अटकेगा, वो श्योर है. अगर कल 7 तारीख को पास भी नहीं होता है, तो हम लोग का मांग ये था कि टेबल भी नहीं होना चाहिए था, और ये जेपीसी जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को एडोब ही नहीं करना था. जब आप पूरा जगह का जगहों को दुख दर्द को आप देखा नहीं है, तो आप एडोब ही क्यों किया? नहीं करना चाहिए था. तो अभी प्रीमेच्योरली आप एडोब किया है, तो आप अभी रिजल्ट भी देखेगा. Since NESO is spearheading this issue, so can you tell us how many MPs are committed to this issue? Since you are saying that most of the MP representing entire Northeast are of BJP or some only few of Congress members. So how many MPs are committed to this issue, or how many MPs are remain mute silent? See, my friend, I cannot tell you openly, but almost all the Northeastern MPs who are in JPC members, they are against this bill wholeheartedly. But they could not come out from that one party line. There is some certain party disciplines are there. They could not come over from that party discipline. But otherwise, we have made all the MPs also, and even the Chief Minister of your Andhra Pradesh, Naidu, they are against this Citizenship Amendment Bill. Your Janata Dal United is with us. Numbers of national political parties, they are with us, with NESO, I should say. But only this BJPs are doing the tactics only. And you say the prominent that one
MPs from Assam, the Raman Deka, उसका दिल दर्द आप जो पर्सनली ऑफ द रिकॉर्ड सुनने से बहुत दर्द है. बोलता है क्यों पास हो गया, फिर भी पार्टी लाइन है, उपाय नहीं, उसका बात को क्यों सुन. JPC had a meeting in several times, but JPC जो उसमें consensus नहीं आ पाया क्योंकि numbers of that one JPC committee they walk out. They used to walk out, and there was no any consensus. Even today also they have no any consensus. It was being forced by the central government that आप लोग इसको ये जो adopt कर लो, हम लोग debate कर लेंगे. अभी तक ये जो JPC में consensus नहीं है. Different of opinions are there. No consensus. ये AGP coalition government जो असम पे है, वो बोले थे आगे ये बिल पास काम है. अपशु जो नेशो का एक तो ये कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एफिलेटेड है, तो हम लोगों को ऑर्डर मिला गया है. तो कल उसका ऑर्डर का हिसाब से हम लोग जो ड्यूटी है अपना अपना स्टेट में, इंटर 7 स्टेट में अपना अपना जो नेशो का जो कंपोनेंट बॉडी है, तो आज सब तैयारी कर रहा है. तो मेरा जो समझ में आया, अपशु का समझ में आया कि क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल से लेकर आपका सिक्किम तक सारा देश का एक हंग है, हम लोग सारा इंडियन हैं. लेकिन मैं तो यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग अलग करने का एक जरिया ढूंढ रहा है. सेट मेरा तो समझ में आ रहा है, अगर इंडियन अगर हमको मानता है तो जो नॉन इंडियन को अगर अभी भी हम लोग के पास टिबेटन प्रॉब्लम है, चकमारिंग प्रॉब्लम है, उसको हम लोग हटाने जा रहा है, लेकिन तब भी और भी ला रहा है. तो ये डिवाइडेड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. मैं तो समझता हूँ, रैली में समझता हूँ, क्योंकि यहाँ वो लोग के लिए कोई जगह नहीं है. और देश जो है दुनिया का एक तो सेकंड लार्जेस्ट मैंने पॉपुलेशन यहाँ में पड़ा हुआ है. यहाँ पे कोई आदमी का जरूरी नहीं है, या इतना आदमी है या खाने नहीं मिलता है, और भी इतना आदमी को लाना चाहता है. इसका सोच और वो लोग का जो तरीका को तो मैं तो नहीं समझता हूँ. इसलिए मैं तो समझता हूँ इसको वाइट जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको मानता हूँ. लीगली ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो आप इलीगली वोट करता है. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बैठा हुआ है तो लीगली मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कर रहा है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में. तो इसलिए हम लोग का जो आतारी में जो बंद कॉल है, इसमें मैं समझता हूँ कि बच्चा से लेकर बूढ़ा तक और जो भी अरुणाचल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए सोचने वाला, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे पुलिस पर्सनल हो, चाहे टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, कोई भी साथ देना चाहिए. क्योंकि आज आप ड्यूटी में ज़रूर है, हमको एक डंडा मार सकता है, हमको एक अरेस्ट कर सकता है, लेकिन आपके बच्चा भी यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, जिस तरीका से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेंशन है नॉर्थ ईस्ट को. तो इसलिए हम तो समझता है कि ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी में हम लोगों को ना पूछा गया है, ना हम लोगों को पूछ रहा है, ना उसका मैंने सोचने पर ये सक्सेस होगा, ना उसका ऑर्डर देने पर हम लोग मानेगा. इसलिए जब देश में जब वॉल में, कहीं भी वॉल में कुछ जब प्रॉब्लम होता है, और खास करके इंडिया में और खास करके नॉर्थ ईस्ट में जब डूबने जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट का तरफ से, चाहे कुछ भी जो खराब होने जा रहा है, तो स्टूडेंट मूवमेंट आगे आया है. हिस्ट्री में स्टूडेंट मूवमेंट आगे आया है हमेशा. क्योंकि कल का हम बाप है, कल का हम माँ है, आज में स्टूडेंट है, कल का हम गवर्नमेंट चलाने वाला है, कल का हम ये जो है टेक्नोक्रेट में जाने वाला है, ब्यूरोक्रेट में जाने वाला है, कोई भी मिलिट्री में जाने वाला है, कोई भी फौज में जाने वाला है. तो मैं तो चाहता हूँ कि सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितना नॉर्थ ईस्ट का जो लोग है और जितना यहाँ पे है, आप परसों दिन सब निकलना चाहिए. तो इसलिए हम लोग का सोच ऐसे है कि हम लोग अभी ईगो में जा चुका है. ईगो में ये जिसका सोचने पर, किसी का सोचने पर, किसी का दबाव में हम लोग आने वाला नहीं है. और ये जो है मुद्दा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत भयानक होने जा रहा है. सारा नॉर्थ ईस्ट
एक खतरा होने जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सीधा बोलना ही बेहतर है, हम लोग अलग हो जाओ, देश में मत बैठो, कंट्री में मत बैठो, नॉर्थ ईस्ट अलग अपना कंट्री बनाओ, बोलो सीधा। नहीं तो हम लोग एक देश का एक इंडियन मानता है तो इनडायरेक्टली क्यों कर रहा है? अगर वो सब नहीं सोचता है तो ये सब बंद करना चाहिए, और ये सब सोचना भी बिल्कुल आपका हिम्मत नहीं होना चाहिए। देश जब अलग अलग होने के लिए जब समय आया था, रैली मैंने देश को जो यूनाइटेड एक लाया है इंडिया, तो आज अलग अलग करने का क्यों बात कर रहा है? मेरे यहाँ में कोई आदमी का जूरी नहीं है, किसी का जूरी नहीं है यहाँ। मेरा ज़मीन बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ में कुछ होता नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट का बात कीजिए, एजुकेशन का बात कीजिए, हेल्थ सेक्टर का बात कीजिए, या तिब्बत का बॉर्डर है, अपना डिफेंस सेक्टर को या आगे बढ़ाने का बात कीजिए। मेरे लोकेलिटी आदमी को या का इंडिजिनस को आप जो छेड़खानी करके आपको क्या मिलेगा? आपका दुश्मनी मिलेगा, और क्या मिलेगा? दुश्मनी मिलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ में किसी के लिए हम लोग का जगह नहीं है, कोई बांग्लादेशी का, पाकिस्तानी का, और कोई यहाँ में मुस्लिम का बिल्कुल जगह नहीं है। इसलिए हम लोग एक स्ट्रिक्ट है, ओपनली है, और गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट है, हमारा यहाँ का डीजीपी को रिक्वेस्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी लोग को भी रिक्वेस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी रिक्वेस्ट है, आप कोऑपरेट करना है। क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं किसी का खराब एक आइडियोलॉजी में और किसी का कहने पर मैं किसी को जगह देने वाला नहीं हूँ। और आपसू हमेशा स्टैंड रहेगा। जरूरी करने पर हम लोग क्या है, बंदूक उठाने से भी क्या प्रॉब्लम है? अपना देश को बचाने, अपना स्टेट को बचाने का। इसलिए ईगो में जा रहा है, रैली ये ईगो में जा रहा है। इसलिए पार्लियामेंट में जब चर्चा होने ये बंद करना चाहिए और दोबारा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि अरुणाचल का इतना पीसफुल स्टेट है, ऑलरेडी अंडरमाइन है, और भी अंडरमाइन होने से तो हम लोग क्या कर सकते हैं? गलत रास्ता चुनने का अलावा कुछ है ही नहीं है। मेरा पास तो टॉप नहीं है, मिशेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा हम लोग का तो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है, ये सब इम्पॉसिबल चीज़ है और बंद करना चाहिए। और कोई भी, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपका बांग्लादेशी को ला के रख दिया, तिब्बतन को ले आके रख दिया, ऑलरेडी यहाँ इतना प्रॉब्लम है। अभी क्या बीजेपी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी को लाना चाहता है, अफगानिस्तानी को लाना चाहता है, और बांग्लादेशी को लाना चाहिए। ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इसलिए गलत सोचने का मौका नहीं देना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक भी नहीं है। एजीपी का तो सवाल छोड़ दो ना, शायद ये जो अरुणाचल जो बीजेपी गवर्नमेंट, ये लोग भी अपोज है ये को, मेरा ख्याल से कोई भी मानेगा ही नहीं है। फिर क्या फायदा पार्लियामेंट में जिस काम के लिए वो बैठा है वो वहाँ पे बोल ही नहीं सक रहे हैं, वो अपोज करने क्या फायदा? हाँ बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। नेसो ऑफिशियली that one question the Honorable Chief Minister Mr. Pema Khandu about his silence on this subject. Yes, because that is a APSU part they are questioning. That from my parts also, from NESO parts also, we are questioning the silence of Pema Khandu. What exactly the points, that one circumstances behind him which make him to keep silence mum on this subject? Whether this he is so caring about the Tibetans and this Chakma Hajing, so that he is not making any comments or not, or others, it's being directed by the higher authority to keep silence. That I am questioning on behalf of NESO. बनाने के बाद लास्ट ईयर